Hi Vivek. Hi Vivek, good evening. So, hello everyone. A very good evening to all. I hope my voice is audible to all of you. Just confirm me once. Is everything is fine? My voice Yeah, is yeah, audible. My screen is visible to you. yeah, it's audible and visible. Yeah. Okay, Shubhas. Thank you. Okay, so this is the first class for this chapter solution, right? And this is very interesting chapter. Okay. Lots of questions were coming, very easy numericals we can say कि बहुत easy numericals इस chapter से आते हैं, and it is going to be one of the most good scoring chapters, right? For the JEE point of views as well as for your एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टेल मी सम बेसिक थिंग्स अबाउट द सॉल्यूशन जो तुम लोगों ने देखा है, राइट? सो व्हाट इज सॉल्यूशन? So in our daily life we came across a many substances, right? For example, we have a glucose water, we have a sugar water, right? So we have an air, mixture of air, we can say cloud, we can say. So these all are the examples of solutions. Okay, so jitni bhi cheezein aapko dikhai de rahi hai, either you consider the toothpaste, or you can consider a syringe, drop of syringe, or you can consider any solid. So these all are, yeah, solvent plus solute is equal to solution. Yes, beta. We are going to study this thing as well. अभी हम देख रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में हम लोगों को क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं. सो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. यानी ज्यादातर क्या है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला के हमने बना लिया है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, राइट? तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या हुआ बेसिकली? सो कैन यू गेस विच ऑफ दीज आर सॉल्यूशन? अगर बात किया जाए इसमें से क्या सॉल्यूशन है, तो दिस इज अ सुगर सॉल्यूशन. तो दिस इज एब्सोल्यूट सॉल्यूशन. नो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ब्रास. सो इज दिस सॉल्यूशन? ब्रास इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन और नॉट? यस और नो? कैन एनीवन? व्हाट अबाउट ब्रास? ब्रास इज अ सॉल्यूशन? हम्म अ बिग क्वेश्चन मार्क. बताओ जल्दी. एलॉय. ओके. सो एलॉय है, तो ये कैसा सॉल्यूशन है कि नहीं? आई एम आस्किंग. होमोजेनियस है, हेट्रोजेनियस है? व्हाट इज एलॉय? What is brass, sir? Okay. So brass is an alloy beta which is made up of two, three things like copper in this, zinc in this. So अगर दो तीन चीजों को मिला के बनाते हैं, that is called alloy. Right? उनका रेशियो फिक्स भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है. So the question is whether the brass is solution or not. Now, what about air? We come later to the brass. What about air? Obviously, air is in a solution. Hmm? Why air is in a solution? फिर बोलोगे एयर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं. Now, all the three are the examples of solution. Now, I'm going to explain you why. कि why the brass, why air, why these are the, you know, solution. कि ये solution हमारे क्यों है. बिकॉज अगर ब्रास में भी देखो तो दो सॉलिड को मिलाया हुआ है, सॉलिड इंटू सॉलिड. एयर भी देखो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर मिक्स. सो सॉल्यूशन डजंट मीन ओनली सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड. सॉल्यूशन मीन्स when the two solid, either two liquids, either two solids, either two gases. सो अगर होमोजीनियस कॉम्पोजिशन थ्रू आउट है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है? सो ये हम लोगों का सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है. यानी वी कैन डिफाइन
The homogeneous mixture of two or more than two component are called solution. Is this clear, everyone? So जो alloy था वो homogeneous mixture था. तो जो भी homogeneous mixture होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Solution. तो दो important point यहाँ याद रखना है. The first one is a homogeneous solution. ठीक है? Not a heterogeneous. We know now what is homogeneous. Homogeneous means having same composition throughout. तो जिसका composition same रहेगा throughout the process, that is called homogeneous solution. So the homogeneous mixture of two or more than two component are called solution. Now here each component may be solid, liquid और gaseous state. यानी यहाँ जितने भी components होंगे either they are solid, either they are liquid or they are gaseous state. So ये चीज clear हुई क्या सबको? हम्म. So we can say that the very important thing, what is homogeneous mixture? So we know now what is homogeneous. Homogeneous means if the composition and the physical properties are uniform throughout the mixture. So if the composition and the physical properties are uniform throughout the mixture, we can say that it is a homogeneous mixture. So let's take a spoon of sugar and mix thoroughly in a glass of water. What happened? Then check whether the taste of the every drop is same or not. क्या होता है? सेम होता है या अलग होता है? हर ड्रॉप का टेस्ट सेम होगा ना. इट्स नॉट लाइक ना कि हमने ऊपर से अभी थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन पिया तो मीठा कम लगा, नीचे वाला ज्यादा स्वीटर लगेगा. दिस इज नॉट थिंग, राइट? सो एक्चुअल द टेस्ट इज सेम, यानी टेस्ट इज यूनिफॉर्म. सो टेक अ स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थ्रूली इन अ ग्लास ऑफ वाटर, then check whether the taste of every drop is same or not. So you observe that, what you observe, that the taste remain same. So we can say that this is a homogeneous mixture. So basically solution consists of two main types, that is solute and solvent. So the component present in the smaller quantity are called solute and the component which is present in a larger quantity are called solvent. So whenever someone asks what is solution, what is solute, what is solvent, then you have to say, what you have to say, the component which is present in a smaller quantity is called solute and the component which is present in a higher quantity or larger quantity are called solvent. So it's not always necessary that solvent are always liquid, right? Sir, yesterday I searched for the PPT. Beta, today is the first class na for the chapter. Previous class was the orientation class, right? So from today you'll get the PPT of all the chapters, right? We'll share a link with you in which you'll get the PPT for each class. Okay. So don't worry for that. Done? चल. So solution consists of two things. कभी भी confuse मत होना. What? कि what do you mean by, कि what do you mean by, क्या समझोगे? कि जब भी कोई पूछते कि क्या हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा? नो, it depends upon the quantity. Sometimes solid also act as a solvent. Sometimes liquid also act as a solvent. Sometimes gases also act as a solvent. So it is not necessary that always you assume कि liquid ही solvent होगा, उसी में हम किसी चीज को डालेंगे. So it's not the true. ठीक है. सो हमारा सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है. सो एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट and anything that is present in a smaller amount is called solute. So this thing you need to remember. Done? Chalo, next. Is this clear to everyone? Recorded class, sir. Where will get the recorded class? All classes will get recorded on the YouTube. So you'll get the, recorded class on YouTube itself. And the YouTube channel name is Avanti Life 2, right? Avanti Life 2.
where you'll get the all the recorded classes. Avanti Life too. Done? Chalo. Next. Now tell me, identify solute and solvent in the given solution. Everyone need to identify solute and solvent in the given solution. So the first case, a solution of 5 gram salt in 1000 ml of water. What is solute and what is solvent in this? Can you identify? A solution of 5 gram salt in 1000 ml of water. तो 5 ग्राम सॉल्ट को 1000 ml ऑफ वाटर में हमने यानी 1 लीटर में 5 ग्राम नमक डाला है. तो विच वन एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड विच वन एक्ट एज अ सॉल्वेंट? यस, सभी लोग सही बोल रहे हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. सो सॉल्यूट इज हेयर सॉल्ट and the solvent is here water. Now next, a solution of 5 ml ethanol in 500 ml of water. Which one is solute and which one is solvent? Yes. A solution of 5 ml ethanol in 500 ml of water. Yes, very good. That is, ethanol is a solute and solvent here is water. So note, important note here, in the above two solutions, the solvent is water. So it is called aqueous solution. So इसको हम क्या बोलेंगे? Aqueous solution. So remember this point. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है in the above two solution, जहाँ पे solvent water हो, तो जब भी water as a solvent होगा, तो we can say that it is an aqueous solution. ठीक है, क्या होगा ये? एक्वस सॉल्यूशन होगा. डन. सबने अच्छा बोला है. तेजस्वनी, क्लैसरॉन, विदारसी, है ना, एवरीवन. जेएनबी हावेरी, रूपश्री, संजना, सहाना. गुड. सबने करेक्ट आंसर दिया. वेरी गुड. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा एमसीक्यू आप लोगों के लिए. जल्दी से बताओ. अ सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. Homogeneous. Hmm? Homogeneous. Very good. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components. ठीक है. So solution is a homogeneous mixture. Very good. Now, इसका बताओ. Homogeneous mixture implies that of appearance. देखने में कैसा दिखता है? Yes, सभी सही बोल रहे हैं. Very good. Yes, that is good. Very good. Uniformity, right? सबने यही बोला. Very good. Now, next. The component present in the small quantity is called. The component present in the small quantity is called. Yes, very good. That is solute. So the component which is present in a smaller quantity is called solute. Now, in a solution of 5 grams sugar in 5,000 ml of water, what is the solvent? Again, water. Very good. So everyone is replying. Yeah, that's very good thing. Very good. You all are very good participator, right? Good. Now, next one. An aqueous solution is one which contain water as a solvent, alcohol as a solvent,
बेंजीन एज अ सॉल्वेंट या क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट? ऑब्वियसली वाटर. सो जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा दैट इज कॉल्ड aqueous solution. ठीक है. So if someone asks what is an aqueous solution, what you need to say कि aqueous solution means if the water is act as a solvent. So whenever water act as a solvent, you can say that this is an aqueous solution. Good. Next, we have classifications of solution. So let's see how solution are classified. So solution can also be classified based on, right? Based on number of components, right? So like components like if the two components are there, three components there, and the four components are there, then solution are also classified. Two components are known as binary solution. Hmm? Two component means what? जैसे we have a salt plus water, right? या फिर हम दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड टू component solution, राइट? तो टू component solution is known as bi, or we can say that it is a bi solution, है ना? Or if the three presents, that is called tertiary and quaternary. So binary solution, ternary solution, and quaternary solution. So depending upon the number of component also, solution can be classified as binary solution, ternary solution, and quaternary solution. Now, on the basis of physical state of solute and solvent, this can also be classified. So this is very important, right? So if the solute is gas and the solvent is also a gas, then which type of solution they form? Gas in gas. And examples are air, right? So if the solute is gas, solvent is also gas. So which type of solution they will form? Gas in gas solution. So example are air. ठीक है. So these are the example. Similarly, when the solute is still gas, but the solvent here is liquid. So gas in liquid. So gas in liquid. Which type of examples? Which type of solution they form? In three or four component solution. What you are asking, beta, Rama? In a three or four component solution, which is solute and which is solvent. Beta, it is depend upon na ki which quantity is in lesser amount, right? Which is in lesser amount. So the quantity which is present in a lesser amount act as a solute, and the quantity which is present in a higher amount is act as a solvent. Now, examples are oxygen is water, carbonated drinks. These all are the example of gas in liquid. This thing we're going to study in this chapter as well. Ki, what happen when the gas is dissolved in liquid. So gas in liquid का example है oxygen in water, carbonated drinks and all this thing. Now, gas in solid. So first case, gas and gas, then gas liquid, then gas in solid. So gas in solid examples are adsorption of hydrogen by nickel, platinum and palladium. So जो absorption होता है हाइड्रोजन का निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम के द्वारा, these are the example of gas in solid. Now, liquid in gas. So what are the example? So liquid in gas का example हो जाएगा evaporation of liquid, that is a moist nitrogen gas. So evaporation of liquids ले लो, moist nitrogen gas ले लो. So these all are the example of liquid in gas. Done. Now, liquid in liquid. So variety of examples are present in day-to-day life. Right, liquid in liquid like ethyl alcohol in water, right? So these all are the example of liquid in liquid. Emulsion, milk. So this all phenomena in which solute and solvent both behave as a liquid. Now, liquid in solid. This is important. Liquid in solid. So, liquid in solid. Examples are mercury. So, mercury in silver को dissolve करो या silver amalgam का देख लो. So, these all are the example of liquid in solid type of solution. Next, solid in gas. So solid in gas का एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? Solid in gas. So आयोडीन हो गया नाइट्रोजन गैस में, या इवेपोरेशन ऑफ कैम्फर हो गया जो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो सॉल्यूट यहाँ पे सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे गैस है.
नाउ सॉलिड इनटू लिक्विड, सो ये हम बहुत पढ़ने वाले इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। सो दैट इज द शुगर और द सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड इनटू सॉलिड, तो सॉलिड इनटू सॉलिड में मेटल एलॉयज, जितने भी मेटल एलॉयज थे सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। यानी ब्रॉन्ज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एलॉयज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। तो ह्यूमन के द्वारा पहला एलॉय जो क्रिएट किया गया था वो क्या था बेटा? ब्रॉन्ज ही था। राइट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर? टेल मी एवरीवन। एवरीवन जल्दी बताओ। यस एवरीवन। सॉल्यूशन ऑफ गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सब लोग अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में क्या है? गैस इन लिक्विड, राइट। गैस को किस में डाला है? लिक्विड में डाला है। सो गैस इन लिक्विड ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सो CO2 की गैस होती है जो डिसॉल्व होती है अंडर अ वेरी हाई प्रेशर। हम्म। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज? बताओ। अभी बताया ब्रॉन्ज। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज? Yes, that is solid in solid. Very good. What type of solution is brass? What type of solution is brass? Tell me. Same, same. That is solid type of solution. ठीक है? Very good, beta. Now, what type of solution is the German silver? Anyone heard about German silver? कोई जानता है क्या जर्मन सिल्वर के बारे में? नो, नो, नो। बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, नहीं जानते। What is German silver? And German silver is a mixture of what? So basically, beta, this German silver is the mixture of copper, zinc, and nickel. ठीक है? So this is a mixture of alloy of copper, zinc and nickel. Basically इसमें ना 60% तो copper होता है. Around 60% is copper, 20% zinc and 20% nickel. तो मैक्सिमम पोर्शन इसका 60% होता है कॉपर का। ठीक है। इट इज यूज टू मेक द ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए इसका काम आता है ज्यादातर। ध्यान से समझना। तो इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ आप बताओ, मैंने इतना आइडिया दे दिया तो विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये बनाएगा? लिक्विड इन सॉलिड, व्हाई? हियर ऑल आर सॉलिड, सो नॉट लिक्विड इन सॉलिड ना।
सर सॉलिड इन सॉलिड, हाँ, दैट इज अ सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन। देखो इस तरीके का दिखता है, जर्मन सिल्वर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। मेटल अमलगम इज अ डैश टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बताओ। मेटल अमलगम, जैसे अभी जिंक अमलगम पढ़ा था, तो मेटल अमलगम जो होते हैं वो किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं? यस, couple of answers were coming. सर सॉलिड मेटल इन अ लिक्विड मरकरी। सर लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, तो अभी किया था बेटा इसको तो, है ना, मेटल अमलगम, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। तो ये होता है लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल, याद रखना। तो जब लिक्विड को सॉलिड के अंदर डालते हैं तो दीज आर द मेटल अमलगम बनते। सोडा वाटर इज अ डैश सॉल्यूशन, क्वाaternary, बाइनरी, टर्नरी या नॉट अ सॉल्यूशन? एवरीवन रिप्लाई। सोडा वाटर इज अ डैश सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा? ठीक है, सबने सही बोला है ना, वेरी गुड। बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ सब्लिमेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जब सब्लिमेशन करते हैं तो सब्लिमेशन के चलते कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनता है? लिक्विड सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस। यस एवरीवन। यस, सबने सही बोला, वेरी गुड, दैट इज सॉलिड इनटू गैस। नेक्स्ट, अ शुगर इन वाटर इज अ डैश टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फटाफट। यस, वेरी गुड बेटा। शुगर इन अ वाटर, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में भी बोल सकते हो, बाइनरी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो, ऑल ऑफ दीज भी बोल सकते हो। ठीक है, सो वेरी मच करेक्ट, गुड। A sugar in a water is a dash type of solution, so we can say that all of these. Now अब हम चलेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ, कि हाउ विल यू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इन दिस चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, we need to relate the various, various concept with the concentration. So we must have a very good command over the concentration so that we can easily understood the basic properties of solution, right? So in our 11th class also हमने पढ़ा था concentration के बारे में. So what is this concentration basically? So let us consider a two beaker which contain the solvent like water. तो दो बीकर ले लो, दोनों बीकर में क्या है? वाटर है, लेट अस assume. अब हमने क्या किया कि let us add solute like salt in both the container. तो हमने दोनों कंटेनर में क्या डाल दिया है? सॉल्यूट डाल दिया।
बट इन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, एक में थोड़ा ज्यादा डाला एक में कम डाला, तो हमें नहीं पता, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डाल दिया। चलो लिख देते हैं, एक में 10 ग्राम डाल दिया NaCl, एक में 30 ग्राम NaCl डाल दिया। नाउ विच सॉल्यूशन विल बी मोर सॉल्टी, ज्यादा नमक किसमें है, NaCl डाला है ना, एक में 10 ग्राम एक में 30 ग्राम, तो ज्यादा सॉल्टी कौन होगा, तो ऑब्वियसली 30 ग्राम वाला, है ना। तो वाई दिस इज मोर सॉल्टी, ये ज्यादा सॉल्टी क्यों है, बिकॉज द मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो जाएगा कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कर रहे हो इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कोई भी पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a known amount of solvent or solution. Done. चलो, so what is the meaning of dilute solution, कोई बताएगा, what is the meaning of dilute solution? What is the meaning of dilute solution, can anyone? लेस कंसेंट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड। यानी a solution in which solute is present in a very small quantity, है ना, is called dilute solution. Now what is the meaning of concentration, just opposite to this, a solution in which the solute present in a more amount is called concentrated solution. So what is the meaning of standard solution, anyone, कुछ भी बताना चाहो। डाइल्यूट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम था, कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था आयंस का। अब पूछा है व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, क्या बोलोगे। देखो, so a solution whose concentration is known is called standard solution। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, और सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन पता होता है between those both in a fixed proportion, high concentration, yes, तो from this any other known concentration can be prepared, है ना, तो उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से मैं किसी और भी कॉन्सेंट्रेशन को प्रिपेयर कर सकता हूँ। यानी अ सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एंड फ्रॉम दिस एनी अदर नोन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर, और इसकी हेल्प से हम किसी भी नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पास 100 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है, तो उससे मैं 10 मोलैरिटी, 1 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी, 0.01 मोलैरिटी, सभी मोलैरिटीज के सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ आपके पास एक क्वेश्चन है, विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब उसको सॉल्व करके वैल्यू से, क्वालिटेटिव मतलब उसको जान के। तो विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशन इफ द ऑप्शंस आर गिवन, quantitative, yes, quantitative because it is based on the amount of solute। तो quantitative किस पे बेस्ड होता है, amount of solute पे। ठीक है, चलो, so next we are going to see
the mass and volume percentage. So this is the first concentration terms, mass and volume percentage. What is this mass percentage? So it is denoted by W by W percent, and the definition is the amount of solute in gram present. The amount of solute in the amount of solute in gram present in 100 grams of solution is called mass percentage. तो जब भी मास परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज रिमेंबर द टोटल मास होगा जो सॉल्यूशन का वो 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है. सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज. उसको क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज. What is the formula to calculate mass percentage? That is the mass of the solute divided by mass of the solution into 100. So mass of the solute upon mass of the solution into 100. This is how we can actually calculate the mass percentage. मान लो किसी ने आपको दे दिया 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा दैट इज 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? सो इफ समवन सेज व्हाट डू यू मीन बाय द 35% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन, देन यू नीड टू से इट मींस कि 35 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution. So weight of glucose is 35, weight of solution is 100. What is the weight of solvent? Solution minus solute, that is 65 gram. So from this given data, you conclude all this value. ठीक है? So आपको यहाँ पे बस 35% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा था, तो उस 35% से आपने मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल लिया, आपने मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता कर लिया, और मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता कर लिया. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन. तो यह भी वेट बाय वेट पढ़ा था, अब आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एम बाई वी. सो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml solution, और इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. कि बताओ कितना मास डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड. मान लो मास ऑफ वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. समझते हैं एग्जांपल से. व्हाट इज मीन बाय 10% वेट बाय वॉल्यूम? क्या होगा इसका मतलब? तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये इसका जनरल सा मीनिंग हो. नाउ आफ्टर दिस, यस, एनीवन हैविंग डाउट? सर लास्ट स्लाइड. Okay, I'll show you the last slide. This one. Okay, note down fast. Okay. Now, what is parts per million? As the name suggests now, million. कि जैसे परसेंटेज क्या था कि आउट ऑफ 100 कितना है, आउट ऑफ 100 कितना है, पार्ट्स पर मिलियन में हो जाएगा कि 1 मिलियन में कितना है. सो वेन एवर यू नीड टू रिप्रेजेंट स्मॉलर वैल्यूज, छोटी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है जो बहुत ही कम अमाउंट में होती है सॉल्यूशन में, सो वी आर यूजिंग parts per million. So parts per million means when the solute is present in a very small, that is a trace quantity, then it is convenient to express the concentration in ppm. So ppm is equal to number of parts of component divided by total number of parts of all the component. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन into 10 की पावर 6, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6. दिस इज द पीपीएम. फॉर एग्जांपल इफ समवन सेज कि मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन अ सी वाटर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम. कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन का इन सी वाटर, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन पीपीएम. Concentration of a pollutant in water
or atmosphere, it can also be expressed in the terms of ppm. Done? Clear है ये दोनों? कि concentration of dissolved oxygen in the sea water can be expressed in the ppm, and the concentration of pollutant in water is also expressed in the terms of ppm. Now the question is, explain the importance of fluoride ion in water and any other use. तो देखो ध्यान से, 1 ppm of fluoride ion concentration in water prevent the tooth decay. तो 1%, 1 ppm अगर फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर में, सो वो हमें प्रिवेंट कराता है किससे? टूथ डिके से. 1.5 ppm अगर रहा फ्लोराइड आयन का इन वाटर लीड्स टू द मोटेल टीथ. Higher concentration of fluoride ions in water become poisonous, and sodium fluoride is used in the rat poison. सोडियम फ्लोराइड को कहाँ यूज करते हैं? रैट पॉइजन में. ठीक है. Now, the last thing देख लो, mole fraction. What is this mole fraction? So, first of all, it is denoted by x, है ना? और definition क्या होता है? The ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all the component present in a solution. यानी definition क्या हो जाएगा? कि the ratio, ये ratio है कि number of moles एक component से total number of moles कितने हैं component के अंदर. मान लो बाइनरी मिक्सचर्स है, मैंने दो चीजों को मिला दिया, ए और बी को. ठीक है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. मुझे मान लो ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी. सिमिलरली अगर मुझे दूसरे का निकालना होता, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी. सो फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट आ गए अगर, तो क्या हो जाएगा? पहले का n1 अपॉन n1 प्लस n2. Similarly, the sum of the mole fraction of all the component is unity. तो unity होता है. Now, it is very useful in relating some physical properties of solution like vapor pressure. It has no unit because ratio of mole divided by ratio of mole, and it is independent of temperature. So this thing is very important. Now, number of moles क्या होता है? ग्राम weight upon molecular mass. मोल परसेंट क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इंटू 100. ठीक है. So this thing you need to remember. Done? So आपके पास कोई भी डाउट हो, you have any doubt you can ask, because next फिर हम next class में करेंगे. So if you have any doubt related to today class, any concern you want to share, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो एक बार. Where you will send PPT link sir? बेटा will update you, है ना, हम आपको अपडेट कर देंगे कि कौन से फोल्डर, वो फोल्डर आपको कैसे मिलेगा, उसका लिंक कैसे मिलेगा. सो विद इन 1-2 days, है ना, ये सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी. ठीक है. एनीथिंग एल्स? Yes, try to solve questions on ppm, right? Try to solve questions from NCERT itself first. पहले तो NCERT से सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 उसमें दे रखा है, तो उस पे पीपीएम के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT itself on ppm, mass percentage and all this thing. ठीक है. In a later part, we are also going to study the molarity, all concentration. Then we jump to the main topic, that is the colligative properties, liquid-liquid solution, or Henry's law, like a gas solution, right? Gas in liquid solution. So this thing we are going to do. But before, आपको ये सारा basic चीजें याद होना चाहिए. Sir, can you show the slide that contains fluoride uses? Okay, I'll show you. This one, beta.
That ओके सो थैंक यू ऑल है ना मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वेयर विल गेट टॉक about the next thing. So thank you all. Thank you for joining.